Yeah, Okay, hi, so good Karma, evening. go ahead. Good Good evening. evening. Well, out of 56 years of my life, 25 years are have been as a single mother. My kids are now grown up, well settled on their own. Uh, the main issue with me, I realized, is it's difficult for me to forget any of the bitter experience that I have got right from my childhood. Now, when I say this, I don't carry any bitterness about the person who gave me this experience. I forgive people, but the scars of that bitterness or that bad or that hurt remains inside. So Can you I describe that a little bit? Let's say, for example, can you pick like one incident and say, I want to understand that in what way it is Sure, bitter that sure, you sure. don't. One of Uh, the examples could be I'm the fourth child born to my parents, and when my mother conceived for my during fourth time, the halat aise the कि they couldn't afford the fourth child, and all other three were born at the gap of 2 years. So she never wanted that fourth child to come in this world. So she went to the doctor, but doctor didn't permit her to get rid of the fetus. And I heard this at the age when it was at 10 or 12 years of age. I heard this mom telling someone. Then I wrote some poetry. Then she read, she cried, and all that thing. Then she explained me that हालात ऐसे थे कि नहीं afford कर पा रहे थे. So I have forgiven my mother, but me being unwanted remained in my head forever. Now, of course, that doesn't reflect in my behavior with anyone. Likewise, some of the so statements which this example, yeah. So what exactly is remained in your head? that I'm born unwanted. So now, not blaming my wanting to blame my mother or the circumstances, but that hurt remains in my mind. And likewise, whatever such experiences, like someone hurt me, someone hurted me in past, or someone kind of did something wrong with me on intention. Uh, I I just want to ask you one thing. You said that this does not reflect in your behavior. hmm, hmm. So, how do you think this could reflect in your behavior? I would have stopped talking to my mom, or I would have carried the bitter relations with her. But today, she finds me as best of her friend, and I try to Hmm. take care of her in the best possible manner that I can. That she's at the age of 87, so and Yeah. I love her the most. I try to give her utmost care. But if that bitterness was to reflect in my behavior, it could have got manifested in either of these things: not talking to her, cutting the relations forever type, or taunting her forever type. But nothing of that sort happens because she explained me. But that thing doesn't go from my head. मेरे दिमाग से You नहीं have जाता. forgiven her, na? Yeah, But that's does it reflect in your behavior with other relationships that you have in your life? Like oh for an yes, example, yeah, yeah. you fear that, people would lead you or leave you or abandon you or just, reject you or maybe Mm-hmm, just get rid of you, mm-hmm, mm-hmm. right? So do you feel that? No, no. By grace of God, I think some of my experiences molded me in a way that I wanted to always ensure that I am not unwanted wherever I go. And the moment I get a hint of being unwanted, I move on from that place. Whether it's a workplace or whether it's the very senior level position, but then I moved on from those jobs also. So that being unwanted is a feeling which I find it difficult to tolerate or be difficult to be part of being treated as being unwanted. So being unwanted was one of the examples, but likewise there are some more things like for example 25 years back when I walked out from my married life with mutual consent. I told my ex that this way we cannot live life. 8 years I tried my level best. Uh, but I walked out with both the kids. But when he was 5, 6 years back, when his sister calls me up and tells me that Kaka is very serious and he got cardiac arrest, I went and released him from my, any grudges if I had any. So that also is not there. But वो मेरे अंदर से नहीं निकलती है बात. Hmm. Right. It's very difficult to probably express or explain, but I hope you are able to relate to what I'm trying to say. Absolutely. Absolutely. Uh, yeah. you have more to ask? No, you can please say. I was asking, Anamika, do you have any more to ask? No, I was just stuck at that point when, so Karma said that it doesn't reflect in her behavior. Maybe it doesn't reflect in your behavior with your mom,
And Mhm. also in case how you treat other people, right? Mhm. That Mhm. you how you respect them, how you love them, how you Mhm. appreciate them. Maybe you are a very nurturing person and Mhm. you just care about all the people who are there, Mhm. right? But Mhm. if you are leaving places, or the moment you feel that you are unwanted, and you just remove yourself from that place, Hmm. so that is a very clear sign Mhm. of that this is a reflection in your behavior, Right. right? Right. Because उस point of time पे the mind becomes so clouded कि Mhm. कुछ और दिखता ही नहीं है. We are not ready to see the other perspective, Mhm. right? And it becomes so clouded that we just don't want to be there, and we just want to run away from that place. Okay, so let me elaborate it with my corporate experience. So, okay, now what happens essentially is I work with transparency, integrity, and that is a problem for many other people who behave otherwise in corporate. And the function I headed in my past companies always had a huge possibility to earn number two. And I today nobody can even finger at me for 4 paisa, 1 paisa, single penny also. So then Seema, my name is Seema. Sukarma is my Gmail mail ID. That's how I appear as Sukarma. But so the moment people realize that Seema is working with so much of integrity towards the organizational this thing, then they try to isolate me. However, my performance ensures that they cannot isolate me, and I don't move from that workplace as a quitter. But after establishing myself when they need me the most, that's the time by grace of God is kind enough to keep showing me the path ahead. And that's why luckily by grace of God, I don't carry any kind of regrets or any kind of this thing complaints for anyone. So uh, I move from the job when I'm at the peak of my performance. So it's not that I Hmm. quit. Okay. I ensure that I establish myself and, with my performance, of course, and nothing else. That is okay, but in the process, what I would say, you did the best for the organization, Hmm, you did hmm, the best for the people, you did the best for everybody around you. hmm, Maybe not just in your corporate experience, but in your personal life as well. hmm, But but when it was time for you to do something for yourself, hmm, something to take, to take the fruits from the tree for yourself as well, hmm, hmm. you left that. No, but my next job offered me much better than what I was in the Okay, previous job. okay, But that okay. internally that prompts me, okay, now look for a job. Or maybe headhunter approaching me. Sometimes I would have continued merrily, but then I said, okay, the opportunity is here, might as well take it and move on. So moving on is not as a quitting or running away from the reality or from the facts, but of course also as much as because the next opportunity is already lined up by Almighty. So I don't know, I'm not able to exactly figure out, but some of my best colleagues who are best family friends, very few of them are there. So they say कि सीमा जी आप ना बहुत चीजें दिमाग में रखते हो. And that Hmm. made me, that was his analysis. And then even his wife said that कि सीमा कितना सोचते हो आप, कितना सोचते रहते हो, कितनी चीजें दिमाग में भर के रखी हुई है आपने. So Hmm. I'm not able to get rid of those uh, I don't know what experiences or incidences or the feelings which I got out of those incidences. Like for example, being the fourth sibling, three elderly siblings used to get together, and I used to be alone in the childhood because I also was suffering from child asthma, so I used to be unwell for most of the time uh, till the age of 10 to 12. So I used to be little irritable, little short tempered, little cranky. And then the three of them used to make fun of me. And then they used to they used to be together and I used to be with my granny. So वो भी दिमाग से Hmm. नहीं हटता है. Like when I share my best childhood memories with my kids, uh, this essentially comes out कि yes कि बड़े तीन लोग इकट्ठे हमेशा together होते थे and I used to be Hmm. away from Yes, them. You know. yes. And this is, I guess, something that it's not exactly what you have not healed as the wound with your mother. Maybe you have healed that, but Mm-hmm, this is the wound which actually needs healing. mm-hmm, mm-hmm, Yeah, because mm. this is your predominant thought now. Every time this comes up in your subconscious, not that what your mother did or what you heard No, and but what. being unwanted also comes equally prominently. That no, matlab, irrespective of who said it, like
I don't know. It's a very weird chemistry inside which goes on in my brain. I'm probably not able to express it. Let me, I understand what you're saying, and I want to clarify one or two things for that. Mm-hmm. Um, how long have you been doing this? Mm, doing this as in this behavior pattern This behavior, yeah, since ever. since ever. Yeah. So let's say we can assume at least 35, 40 years. More than that. Probably 56 में से आप 10-12 निकाल दो. हाँ, Yeah. चलो. Yeah. So, Okay. What you said is right. हाँ. हाँ, so 40 plus years से आप ये कर रहे हो, Mm-hmm. right? Mm-hmm. That's one thing, right? When you walk, do Mm-hmm. you walk looking down? No, it's straight forward. Not even up, not even down. Straight No, forward, straight line. straight forward. Okay. Mm-hmm. And when you are sitting and when you're not talking to someone and all that, at that time, is your head down at that time? No, I sit very erect, straight back, straight spine. Though spine has been operated in 1993, but again, see, the best thing is I remain grateful to Almighty because whatever adversities, whatever difficulties, troubles, problems came my way, was probably I've been listening to all the conversations and reading all the conversations, so I don't want to contribute it to my destiny, मेरा पिछला जन्म, मुझे कुछ नहीं analyze करना है, but whatever came my way, He Almighty gave me the strength and courage to sail through it very strongly and boldly. So I have no complaints for life. But ये एक जो छोटा सा कुछ में मुझे जो feedback मिला था मेरे colleague से कि आप कितना सोचते हो दिमाग में, आप कितना bitterness carry कर रहे हो past के बारे में. ये थोड़ा सा मुझे that and this feedback I got not many years ago. This was just in 2013-14 types, 7-8 years back type. And was this the first time you got that feedback? इससे Yeah, पहले किसी ने नहीं no, वो चीज no, मतलब no. आप ये पहले 40 years से कर रहे हो but किसी ने कभी नहीं ध्यान दिलाया इस बात पे? no. This was the first ever time I was made to realize कि यार ऐसा भी कुछ मेरे में थोड़ा सा problem है जो मैं I need to overcome or I need to work on that. अच्छा, even someone in your family, your husband, your any parents or anyone, nobody ever pointed this out to you? No, nobody. Because I used to express, my mother did understand me. बोलती है इतना emotional मत feel करा करो. It's not that. I mean, whatever you feel. क्योंकि थोड़ा सा वही हो गया था because my expression started coming down on the paper, pen and paper, and people called it as a poems later on. Of course, I'm a Marathi, so I used to write in Marathi. So then they were appreciated as my poems and words of expressions in my friend circle. Very few people I shared it with. So my mother used to always try to handle कि नहीं इतना मत सोचा करो, don't think so उससे भी much. बातें करते हो आप? Never. Okay, so whenever I feel stressed, I sing a lot. So that's my stress buster. ठीक है. And तो one ये one bitterness, question okay, go ahead. एक लास्ट क्वेश्चन पूछा कि ये जो bitterness की आप बात कर रहे हो, how do you know you have this bitterness? I know it because What that's a tells good. you? Because then I immediately go back to the past, which generally I avoid. Something नहीं, वो तो triggering. memory हो गई. I am asking bitterness. You are using the word bitterness. So I am asking, how do you know you have bitterness? Actually, that is also a good question because just because my very good colleague come friend told me this, I'm thinking about it. Is it bitterness or is it just a memory recall? And if it's just आपको क्या लगता है? अब आप बताओ ना. अब मैं पूछ रहा हूँ तो अब बताओ. Like what? Is it bitterness? I feel it's bitterness or I don't know, or some impact I may call it. If not bitterness, there's some impact because when I heard this, though my mother clarified it, I decided that though I was born unwanted, I will not die unwanted. And that's why I will probably it could be the reason that I go out of my way, help people, anyone in trouble around me, not only financially but also in physically. किसी को टिफिन भेजना, किसी की सेवा करना, किसी को कुछ चाहिए. Of course, that's been my innate nature also since childhood because I always served and did seva of my grandmother also, who was then ill during her last day. So I don't know. It's a combination of
few things. So as you rightly asked me, I don't know if it's bitterness or if it's just the impact of the memories or experiences. So Assuming, let's say assuming it is bitterness, mhm, तो what, so अगर हम ये assume करते हैं कि it is bitterness, तो how would you explain me? मतलब मैंने तो आपको कभी देखा नहीं है, आपसे बात नहीं की है, तो how would I know कि you are bitter from inside? आपके कोई तो behavior से, किसी तो बातों से, attitude से ही तो मेरे को समझ में आएगा ना। किसी ने आपको अगर बोला है देख के कि you look bitter, तो कोई तो behavior attitude से ही समझा होगा ना उन्होंने। आप किसी के मन में तो कोई झांक नहीं सकता। हाँ जी, because I don't open up very fast. I was a very social animal. I had a huge circle which I started shrinking and started being little choosy and selective. And then I find it difficult to open up to strangers or open up to the colleagues around कि जो मतलब इतना फ्रेंडली नेचर मेरा नहीं रहा। थोड़ी सी मैं जो नहीं थी पहले, वो मैं थोड़ा सा शायद से आई कांट कॉल इंट्रोवर्ट, बट थोड़ा सा सिलेक्टिव एंड चूजी हो गई मैं। ये तो मुझे पता है, इतना तो चेंज हो गया मुझ में। पहले नहीं थे, अब हो गए। हाँ जी, पिछले कुछ सालों में मैं जरूर हो गई हूँ। ऑफ So कोर्स देयर आर this is सम what someone will interpret। तो अगर कोई आपको जज जानता हो पहले से, वो आपको देखेगा तो बोलेगा कि you are bitter। इनफैक्ट माय ओन किड्स आल्सो टेल मी कि आई नाउ अभी खुद के लिए थोड़ा सा जी लो ना। आप कितना मतलब कितना वो करते रहोगे, दुनियादारी कितना करते रहोगे, लोगों के लिए कितना जीते रहोगे। तो माय डॉटर टुक अ बेट ऑन मी कि प्लीज प्रूव दैट यू कैन लिव फॉर योरसेल्फ बाय टेकिंग वन वीकेंड ऑफ एंड ट्रैवलिंग समवेयर आउट फॉर योरसेल्फ। So I don't know. So I don't know. I mean, forgetting living for myself is another observation my kids also share with me. My son is in USA. He's doing well there. My daughter is MDA. She is doing well. So वो बच्चे अभी मुझे बताना शुरू किए कि थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालो मम्मी। ये पता नहीं, I mean, I don't know if this is related, not related, connected, not connected. I don't know. So sometimes I feel रिलेटेड और वो नहीं, मैं जस्ट यही समझना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपको बोलता है कि यू आर बिटर एंड इफ यू बॉट दैट आइडिया, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपके कौन से बिहेवियर, कौन से एटीट्यूड से ये पता चलता है कि यू आर यू आर बिटर। तो so आप क्या फीडबैक अकर्णा जी, फीडबैक वाज नॉट आई एम बिटर कि मैंने बहुत सारा बिटरनेस अंदर इकट्ठा करके रखा है। ये प्रिसाइज फीडबैक था कि आपने कितना कुछ अंदर दबा के रखा है, आप खुल के बोलते क्यों नहीं है, आप दिमाग से निकालते क्यों नहीं है चीजें। So not that I am bitter to anyone or not that anyone found me bitter to him or her, but it's that bitterness piled up inside was the precise feedback. I have one question in this regard. Mm-hmm. So, okay, कि 2013 के पहले nobody told you that why you have so much stuck inside you. But when somebody who cares about you, he or she told you that why are you thinking so much and you have so much stuck inside you, वो जानने के बाद भी, even after knowing that, coming to that point, why do you still continue to keep all of it inside? Because उसके पहले वो awareness में नहीं था. But at that point of time, it came into your awareness that yes, I keep these things, baggage. I carry this baggage. But why are you carrying that baggage even after you know you're carrying the baggage? What is it? Yeah, okay. So after I got this feedback, I thought a lot to myself. I discussed with my kids also because they are my bestest of the friends. So what I realized was I don't know if I'm unable to figure out whether that baggage is still there or not. But sometimes why it so happens that I just go in a shell. Sometimes I find life is now why to live life. My duties are done. I had taken responsibility of kids. So my purpose of my life is done. Now, do I really need to live and see further struggles of life? Of course, this doesn't mean the suicidal tendencies, okay? But these questions keep coming. What is the purpose of my life which is still remaining that I need to still live life? And so थोड़ा सा अलग ही वो कुछ हो गया है. So I won't be able to answer you, Anamika, if I have that piled up baggage inside. Have I gotten rid of that? I don't know today. But since I got this opportunity, I thought of discussing and trying to have some clarity possibly. There is one thing which I am kind of understanding from your situation. I will share that with you. पर उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि as Anamika said कि 2013 में आपको feedback मिला, तो आपने कुछ किया उस feedback पे फिर? Did you try to get rid of it? I did lot of introspection कि ऐसा क्या क्या मेरे दिमाग में भरा है, ऐसा संजय ने क्यों बोला होगा,
कि आप कितना कुछ दिमाग में संभाल मतलब रखे हुए हो, कितना बर्डन, मतलब वो कितना तो आप सोचते हो। बेसिकली हर समय सोचते रहते हो और आप फिर इस बात पे भी और सोचने लगे हाँ फिर जी, बेसिकली काइंड एब्सोल्युटली। ऑफ। हाँ। या आई तो डिड लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन राइट फ्रॉम जब से होश संभाले, बचपन में जैसे समझना शुरू किया था तब से मैंने याद करी पूरी जिंदगी का पूरा एक वो रिव्यू करने की, इंट्रोस्पेक्ट करने की। और क्या एंड क्या नतीजे पे पहुंचे? एंड देन आई रियलाइज आई डोंट नो कि क्या पैदा हुए जीना है वो that, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं मैं फिंगर पॉइंट आउट कर पाई हाँ, थी। कर भी नहीं पाओगे। हाँ हाँ मैं हाँ सिंपल आंसर देता हूँ, कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि हाँ। द माइंड दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम कांट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हम्म। आप ही का माइंड ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आप उसी की हेल्प ले रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो दैट इज नॉट द क्वेश्चन विच आई आस्क हम्म। कि आपको किसी ने ये चीज बताई तो आपने कुछ किया, आपने कुछ हेल्प ली इससे नहीं रिलेटेड, नहीं नहीं कुछ नहीं किया इसके बारे नहीं में? नहीं किया, because I was too engrossed in bringing up my kids. Even 7-8 years back, my kids were still dependent on me financially. It's just since last year they are on their own financially. But still, I have to get my daughter married. I have to get my No, son no, married. and you have been doing things for Hmm. everybody you have in your life. Hmm. और ये अगर आपने अपने लिए किसी और एस्पेक्ट में कुछ नहीं किया है तो ये भी तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू हैड टू डू फॉर योर सेल्फ, बट यू आर नॉट फोकस्ड ऑन डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ, so why would you Hmm. do this? Hmm. Hmm. So Hmm. just like anything else that you don't think about yourself and you think about everybody else, Hmm. in this case also you did not think about yourself. Hmm. And even if when your kids told you that you need to think about yourself and live your life, so Hmm. what is that just one thing or anything that you have thought of doing for yourself कि यार ये this I want to do for myself, Hmm. and what is stopping you to do that? Because I mean, okay. So yeah, so the last job I left was in 2019 October. After that, I thought I'll take break of 6 months and then I will look for another opportunity. But then the pandemic happened. So 3 साल घर पे बैठने के बाद, I started loving being at home, confined to home, not even crossing the door. That was also something I found myself at peace with myself. मुझे ऐसे कोई क्रेविंग ही नहीं रही है अभी कि मुझे घूमना चाहिए, घूम विजिट, आई नीड टू गो प्लेसेस एंड आई नीड टू have trips and even in fact simplest example नहीं, today like मैं सुकर्मा, बात वो नहीं है कि आपको हम्म क्रेविंग नहीं है। हम्म पॉइंट ये है कि आपको आदत ही नहीं है वो करने की। हाँ जी प्रिसाइज तो दैट इट्स नॉट दैट आपका वो लाइफस्टाइल ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी वो बनाया ही नहीं, आपने अभी कभी उस चीज को प्रायोरिटी दी ही नहीं। तो अब आपके पास टाइम भी होगा ना तो भी हम्म कर नहीं पाओगे वो, नो क्योंकि वो कभी किया ही नहीं। because 25 years my daughter was 7.5, son was 3.5 and I had to, my entire life was focused on my job, my बच्चे and my घर, तीन हाँ चीजों हाँ, के आई बगैर। अंडरस्टैंड। हम्म सब 25-30 साल तक एक ही चीज करते करते एक आदत पड़ जाती है, एक लाइफस्टाइल हम्म सेट हो जाता है, एक सर्टन रूटीन बन जाता है। So हम्म even it's not about that whether you should travel or whether you should do this. It's not about that. Even हम्म sitting in home हम्म and not prioritizing another person and saying नहीं आज मैं किसी का कुछ नहीं करने वाली हूँ, आज मैं बस बैठूंगी और मैं बस नेटफ्लिक्स देखूंगी, that is also putting the foot down. But आपने वो हम्म कभी किया नहीं है और आपसे वो होगा भी नहीं। तो हम्म it's like that कि वो आदत ही नहीं है ना, you are not able to say that। अगर आपको घर पे बैठ के अगर ये भी हो ना कि नहीं मेरे को आज नहीं करना कुछ भी, आज मैं खाना नहीं बनाऊं, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, तो जिसका जो मन है अपने आप ऑर्डर कर लो, कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, आई एम टेकिंग अ डे ऑफ, राइट, वो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपने कभी किया नहीं, राइट। सो लेट्स आई एम कटिंग इट शॉर्ट, क्योंकि yeah एक्सक्यूजेस का कोई वो नहीं है कि ये इस right रीजन से या उस रीजन से, बच्चे right छोटे थे, बड़े हो गए, ये था वो था, ये नहीं है, वो आदत ही नहीं है, वो है ही नहीं, वो मसल ही नहीं है, राइट। तो इसलिए वो होगा भी नहीं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट व्हाट यू आर शेयरिंग इज दिस हैबिट। तो जहाँ जो जितना मैंने अभी तक सुना है आपकी बात, उसके बेसिस पे आई फील कि this is nothing more than an addiction now for you. sorry can you आपको repeat that you are addicted to this behavior now.
Mm-hmm. 40 साल से ये चीज कर करके आपको इतनी एडिक्शन हो गई है इस चीज की कि अब ये आप जान के भी कि ये मेरे लिए हानिकारक है, Mm-hmm. आप छोड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि यू आर नाउ एडिक्टेड टू इट. तो इट्स गॉन टू दैट पॉइंट वेयर इट इज एडिक्टिव. नाउ है क्यों ऐसा? क्योंकि so for this, what I know that would work for this kind of thing is an NLP intervention. Mm-hmm. Neuro linguistic programming, if you've heard of NLP, NLP Yeah. intervention is what will help you to come out of this thing. This is beyond coaching. Mm-hmm. Mm-hmm. तो आप बेसिकली इतने स्मार्ट हो गए हो ना इतने टाइम तक ये करते करते कि कोई भी कोच आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा. आपके पास हर चीज का आंसर है. Oh, that's unfortunate. हाँ, it is unfortunate. Sometimes our smartness actually comes in our way. Absolutely. तो आपके पास हर चीज का एकदम ऐसा आंसर है ना, एकदम रिटर्न, क्योंकि आपने इस चीज को इतना दिन तक वो कर लिया है. एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोगों ने आपको ये चीज बताई, बात की, ये सब किया, आपके पास अभी हर चीज का आंसर है. तो कॉन्शियस ब्रेन से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं आपकी. राइट, दिस इज बियॉन्ड कोचिंग. So what is required here is an NLP intervention. NLP intervention, and NLP is like an umbrella concept which has many concepts in it. आपके लिए जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो वर्क करेगा उसमें NLP में एक टेक्निक होती है, इट्स कॉल्ड पार्ट्स इंटीग्रेशन. Okay. So parts integration is what needs to happen. So you have splits inside you which don't agree with each other. तो कोई एक पार्ट है जिसमें जो एक्सेप्टेंस में है सिचुएशन के, कोई एक पार्ट है जो एक्सेप्टेंस में नहीं है सिचुएशन के. तो अभी आपको ना कोई और ही नहीं चाहिए लड़ने के लिए, आप खुद के लिए एनफ हो. आपके अंदर ही एनफ स्प्लिट्स हैं खुद की लड़ाई करने के लिए. अभी आपको दूसरे को ब्लेम या दूसरे से लड़ने के लिए कुछ भी जरूरत, कोई मटेरियल की, कोई इंसान की जरूरत ही नहीं है अभी आपको. अभी इंटरनली ही बहुत है आपके स्प्लिट्स. तो वो इंटरनली लड़के आपका टाइम पास करते रहते. तो ये एडिक्शन हो चुकी है. ये एडिक्शन का जो दवाई है वो है पार्ट्स इंटीग्रेशन NLP टेक्निक that needs to be done. Okay, that's interesting understanding. Great. I mean, I'm really grateful that I got some way to think forward. Think about it. Think. Yeah. Not just think in lateral terms, the way Akarma said that NLP intervention and parts intervention. This call is recorded, and in this call only we have asked you many questions, and all the questions you have answered very intelligently. Oops. Okay. And it goes in loop, it goes in circle, right? Because I asked you a question that even when your kids told you that you need to take care of yourself, what is stopping you to take care of yourself? Okay. And like that, there are so many questions which we have asked you. So for there's an exercise for you to do is you listen to this call again. Sure. And take yourself out of the call and see the questions which we have asked and the answers which you have given very objectively, and then you will see why Akarma recommended what he recommended to you. Sure, I would love to do that. Certainly. Something interesting. Yeah. Yes, and it's not just lateral thinking that he gave you a solution and you just think that, okay, this is the solution, and this, not just in a linear fashion. You have to see it from like different angles now, because the problem which you just started from and where we have come, that in itself has like 10-12 different paradigms to it. Different, like it's spread out all across, and it's all interconnected, but at the same point of time they look very separate problems. Right? So yeah, that is another homework that you go through this call and introspect. So that's why I don't generally actively participate in the WhatsApp chats, but I read everything very carefully before sleeping every day. So that itself also is a great learning. But yeah, as you guided both of you, Akarma and Anamika, I'll surely start the new way of thinking that you have guided me today. Yeah.
Thanks a ton. Thanks a ton. Thanks for sharing. Thank you. Hi, Seema, your hand is up. Hi, good evening, everyone. Good evening. Good evening. How was it? And good to hear that your trip was very good, Anamika. Yes, it was amazing. Thank you. We'll be looking forward to hear more of it from you in bits and tits, maybe whenever you We get. will. Yeah. So, my first question to you and Karma is this. I want to understand from you is what are patterns and how patterns are different from addictions. Like, I do understand in the journal terms, but I'm a little conflicted. So maybe I want to understand with an example first what exactly are patterns and how sometimes patterns also can be turned to addictions. So, am I making any sense? Patterns and addictions are same thing. They are not different as such. It is the way they impact us is different. Okay. So a pattern is something that you do. You're doing something subconsciously, and Okay. then when someone points it out to you or you only reflect and you see it yourself, then with the awareness you start to work on the shift, and you work either yourself or with the help of someone, and you bring the shift because now you are aware. पहले पहले पता नहीं था कि ऐसा कर रहे थे, तो हो रहा था, पर किसी ने बताया या खुद से दिख गया कभी, तो फिर हम जब अवेयर हो जाते हैं तो फिर अवेयरनेस के बाद भी अगर हम वो चीज करते रहते हैं और हम रुक ही नहीं पा रहे हैं, राइट, हमें पता है कि ये खराब है, ये गलत है, लेकिन मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं और क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ. सो जैसे कॉल में मैंने एग्जांपल दिया था कि एडिक्शन, जैसे लेट्स से कि कोई अल्कोहलिक है, तो वो अल्कोहल से उसका लिवर खराब हो गया है, किडनी खराब हो गई, सब कुछ प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा, और डॉक्टर ने उसको खुद भी पता है, डॉक्टर ने भी उसको बता दिया है कि अभी तो हेल्थ एकदम लग गई है उसकी और एवरीथिंग इज देयर, और उसको भी मालूम है, लेकिन जैसे ही उसको दारू की बोतल दिखती है वो रोक ही नहीं पाता अपने आप को. उसको सब मालूम है कि ये कितना खराब है, क्या है, बट वो रुक ही नहीं सकता. दिस इज एडिक्शन. So the same way, if you see your own patterns, you see your own behavior, लेकिन आप रुक ही नहीं पाते हो, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपने आप को, that is addiction. Okay. So here is another question interrelated to this only. So supposing I've started becoming aware that this is the kind of pattern that is being followed in my life and relationships. So I'm being aware that I will not be repeating it, and I'm like very consistently practicing on it. But what if I go in a next relationship and I'm being aware that I won't be doing this? It's like my conscious choice that I'm making it, that I don't want to repeat this pattern. No, I had my all lessons and everything. But somehow I see that it gets manifested or repeated again by itself. What does that mean then? Like, that's not me who's doing it consciously. That's not even my addiction. That means you are aware, but you haven't done anything about it. So just with awareness, वो चली नहीं जाएगी ना, उसके ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा. पहले तो अवेयरनेस ही नहीं थी, पहले तो बस हो रहा था, पहले तो बस करे जा रहे थे हम, वो किसी ने कुछ बोला और एक सर्टेन तरीके से हमने रिस्पॉन्ड किया, एंड लाइफ इज गोइंग ऑन एंड ऑन लाइक दैट. फिर एक दिन किसी ने पॉइंट आउट किया कि ये ऐसे है, या हमने खुद से ही रियलाइज किया, पर रियलाइज करने के बाद भी अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है और मैं वैसे ही वही किए जा रहा हूँ, तो फिर चेंज कहाँ है? फिर वो तो अवेयरनेस भी बेकार ही है. उससे बेटर तो फिर इग्नोरेंस ही था, फिर इग्नोरेंस में ही रहते. लेकिन मैंने कैसे अट्रैक्ट करा फिर इस रिलेशनशिप को, जिसमें मतलब मैंने तो कॉन्शियसली अवेयर भी हुई और करा भी होगा कुछ ना कुछ, तो चाहे बहुत बड़ा चेंज नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होता है. सो जब हम ये बोलते हैं कि अट्रैक्ट कैसे किया है, तो अट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम कोई मैग्नेट हैं और जैसे मैग्नेट कोई भूसे के ढेर से ऐसे सुई को ऐसे अट्रैक्ट कर लेगी, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट कि दुनिया में ढूंढ के आप कोई मैग्नेट की तरह इन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो. ये इसका ये मतलब नहीं होता. अट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप डेली आपकी लाइफ में 50 लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, लोग आएंगे आपकी लाइफ में, वर्क रिलेटेड, पर्सनल, ऑल दैट, आप 50 लोगों से मिलोगे,
लेकिन वाइब उन्हीं लोगों के साथ करोगे जिस लेवल पे आप खुद सोचते हो, Okay. जो आपका थॉट प्रोसेस है, जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से आप रहते हो, वही आपको दूसरे में वो चीज रेजोनेट करेगी। दूसरा आप अग्री करोगे, अब आपके साथ कोई बात करेगा तो आपको लगेगा अरे हाँ ये भी वैसे ही सोचता है जैसे मैं, ये भी वही वैसे ही रहते हैं जैसे मैं, तो वो एक रेजोनेंस फील होता है, अपनापन फील होता है उसके साथ। Right. ठीक है, तो चाहे वो जो रेजोनेंस है, चाहे वो बिलीफ सिस्टम या थॉट प्रोसेस सही है या गलत है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। Mm. आप तो जैसे भी रह रहे हो तो सही ही रह रहे हो ना, तो आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है वो तो सही ही है। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल आज एक दूसरे ग्रुप में, आई थिंक यू आर पार्ट ऑफ दैट सिंगल पेरेंट्स ग्रुप आल्सो ना। हाँ, yeah. हाँ, तो आज उसमें एक पॉइंट उठा था जिसमें वन पर्सन सेड कि कुछ ट्रस्ट पे बात चल रही थी ना, हाँ, कि yeah. कि Trust and ट्रस्ट करना respect. बहुत मुश्किल होता है। हाँ, इट्स ऑलवेज लाइक दिस एंड दैट। ठीक है, तो अब वो एक पॉइंट है। अगर आप भी यही बिलीव करते हो कि you cannot trust someone, they have to prove that you need to trust, that you can trust someone। ठीक है, आप, और वो कोई कहीं से भी आ सकता है, forget about कि वो कौन से लाइफ एक्सपीरियंसेस से आ रहा है। मैं अभी जस्टिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है, आपके कोई भी लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, आपका ट्रस्ट किसी ने ब्रेक किया होगा, और आपको अब ये लगता है कि किसी को ट्रस्ट करने से पहले दे हैव टू प्रूव दैट दे आर ट्रस्टवर्दी। right. तो यू थिंक लाइक दैट, नाउ दिस इज योर बिलीफ सिस्टम। अब आपके सामने मान लो कोई ऐसा आता है जो ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं। दो लोग आते हैं आपके साथ में, ठीक है, Right. आप लेट्स से कि आप किसी पार्टी में जाते हो और पार्टी में आप बैठे हो, सोशलाइज कर रहे हो, और वहाँ पे दो लोग आते हैं। दो लोगों में से एक बोलता है जो आप बोलते हो कि ऐसा है, और दूसरा बंदा बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, ट्रस्ट तो ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। आपका एकदम ऑपोजिट बोलता है जो भी आप बोलते हो। आप किसके साथ रेजोनेट करोगे दोनों में से? मैं फिलहाल दोनों से नहीं करूंगी। नहीं, जस्ट Okay. प्ले द गेम दैट आई एम। हाँ, तो अगर जाना है तो द वन मेरे को इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि कि मैं दूसरे का क्या पर्सपेक्टिव सुन रही हूँ जो ऑपोजिट है मेरे, बट डेफिनेटली रेजोनेंस एंड फेमिलियरिटी ज्यादा उसके साथ लगेगी जो मेरी भाषा बोल रहा है ट्रस्ट के बारे में। करेक्ट, जो आपके भाषा बोल रहा है आपको उसके साथ होगी। ठीक है, तो अब मान लेते हैं, लेट्स इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं कि लेट्स से कि यू आर ओपन टू फाइंड अ रिलेशनशिप विद समवन। ओके, ठीक है, अब आपको दो पोटेंशियल लोग मिले, दो पोटेंशियल पार्टनर्स हैं। एक इस तरह से एक वैसा सोचता है जैसे आप सोचते हो, और एक एकदम ऑपोजिट सोचता है आपसे। हाँ ठीक है, वो अलग सोचता है, आपको क्यूरोसिटी हो रही है, जानना चाह रहे हो, वो अलग बात है, वो एक इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी है। लेकिन रेजोनेंस तो उसी के साथ हो रही है ना जो आपकी भाषा बोल रहा है। या वेरी ट्रू। तो अब जो आपकी भाषा बोल रहा है, आपको लगेगा कि हाँ ये बंदा समझता है मुझे, क्योंकि ये तो इसके साथ, एंड लेट्स से कि यू आल्सो फील अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। ओके, तो अब यू विल स्टार्ट, एंड ही आल्सो फील्स अट्रैक्टेड टू यू, so now you both will start to know more about each other, and let's say you decide कि we want to go in a relationship and all that, so आगे बात बढ़ती है। ओके, अब यहाँ पे कैसा प्ले होगा कि आप उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, वो आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों ही सेम सोचते हो कि ट्रस्ट तो अर्न करना पड़ेगा, जबकि चाहते दोनों यही हो कि ट्रस्ट मिले, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को दे नहीं रहे हो, दोनों ही एक दूसरे से मांग रहे हो। Yeah, because I think what you're saying is right, but I feel unknowingly we definitely when we are coming together, वो भी तो एक natural सा trust है ना, whether it was resonance वो of ट्रस्ट any, नहीं है, वो रेजोनेंस है बस। वो resonance, वो जस्ट एक फेमिलियर, वो बस रेजोनेंस है, वो ट्रस्ट नहीं है। वो बस ये है कि हाँ हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, लाइक यू फील फेमिलियर विद दिस पर्सन, यू फील कंफर्टेबल विद दिस पर्सन। okay, तो इसको ट्रॉमा बॉन्डिंग बोलते हैं। okay, okay. राइट, सो Why we call it a trauma bonding? because you Because both learned this from a trauma. Yeah, that the trust has to be like this or has to be asked.
right? This is what you're So saying? there is a resonance that has come from a state which is not a healed state. आपको लाइफ Okay. से कुछ तो प्रॉब्लम्स मिली हैं और उन प्रॉब्लम्स की वजह से आपने एक बिलीफ सिस्टम बनाया। उस Right. भी इंसान को, दूसरे इंसान को भी लाइफ से कुछ प्रॉब्लम्स मिली और उसने भी आपके जैसा ही कोई बिलीफ सिस्टम बनाया। Right. प्रॉब्लम्स दोनों की अलग अलग हो सकती हैं, सिनारियो दोनों के अलग अलग रहेंगे, आप दोनों की लाइफ अलग अलग है, दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहेंगे, लेकिन लेसन या जो कंक्लूजन है दोनों ने सेम निकाला। Right. Right. ठीक है, अब कंक्लूजन सेम निकाला है तो आपको लगता है कि हम तो सिमिलर, हमारी सोच मिलती है, Mm. तो हम लोग सिमिलर हैं, हमारी सोच मिलती है, तो उसकी वजह से आपको ये लगेगा कि ये बात हम सिमिलर हैं, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब आप रिलेशनशिप में जाते हो ऐसे किसी इंसान के साथ Mm. जो खुद ट्रॉमेटाइज था, आप भी ट्रॉमेटाइज्ड हो, उसको भी ट्रस्ट करने में मुश्किल आ रही है, आपको भी ट्रस्ट करने में मुश्किल आ रही है, तो अल्टीमेटली यू विल क्रिएट अ टॉक्सिक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ईच अदर। Yeah. Yeah. क्योंकि True. ना आप ट्रस्ट कर सकते हो ना वो ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ, Right. एक अलग अलग इंसान रह के आप फैमिलियर एक दूसरे के साथ अगर वो कंफर्टेबल हो रहे हो तो वो एक बात है, क्योंकि उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप एक पार्टी में मिले, आपने बात की, आपको बड़ा अच्छा रेजोनेंस फील हुआ, बात हुई, वो अपने घर गया, आप अपने घर गए, Right. ठीक है, तो कुछ नहीं है। लेकिन जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, जब इस सिचुएशन को लेके हम आगे बढ़ते हैं और हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं अट्रैक्ट कैसे करूं, दिस इज व्हाट वी कॉल अट्रैक्टिंग, बिकॉज यू फिल्टर्ड आउट अ पर्सन हु थिंक्स डिफरेंटली फ्रॉम यू। Yeah. Getting it. Getting it. Right? Yeah. You have filtered that person out. You have only filtered what you what you consider is right Yeah. Because of my because of belief. your experience, because of your belief system. Yeah. ठीक है, तो आपने उस बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करके या उसको चेंज करने के ऊपर काम करने की बजाय आपने उन सारी चीजों को निग्लेक्ट कर दिया, इरेडिकेट कर दिया जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प कर सकती। और यही, अब मान लो इस चीज को हम दूसरे तरीके से लेते हैं, लेट्स से कि यू हैव दिस, अब ये रिलेशनशिप में आप आए एंड देन यू रियलाइज कि ये कितनी टॉक्सिक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो गई थी, क्योंकि ना मैं उस पर ट्रस्ट कर पा रही हूँ ना वो बंदा मेरे पे ट्रस्ट कर पा रहा है, हम दोनों को ही ट्रस्ट इशू हो रहे हैं। Yeah. तो और जस्टिफाइड भी है, दोनों को पता भी है कि क्यों, पर अब आप मांगोगे कैसे, किस मुंह से मांगोगे, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी ये बोला है कि ट्रस्ट करना आसान नहीं है। तो देन यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द अदर पर्सन आल्सो ना, क्योंकि ये तो आपका यही तो बिलीफ सिस्टम है कि नहीं है, तो नहीं है तो नहीं मिल रहा ना फिर। So how, oh yeah, getting it what you're trying to say, but maybe I won't be able to express it in words. So yeah, you're right actually. When I'm actually thinking like this, then I will be attracting people like this only. That's why I think many people on our group are have met unemotionally emotionally unavailable. Yeah. एग्जैक्टली, क्योंकि हम अपने ऊपर काम करने से पहले ही हम फिर दूसरे, हमें ये लगता है कि वो इंसान ही गलत था। Yeah, actually I'm मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंसान गलत था, दूसरा ढूंढते हैं। Yeah, actually the person was not wrong. The person was different from me. He couldn't, or maybe he also was going through something like me. हाँ, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये कि आपके कोई आपको ट्रस्ट करे। इंटरनली तो हम सब यही चाहते हैं, Yeah, है of ना, course. इंटरनली हम चाहते यही है कि आई वांट टू अट्रैक्ट अ पार्टनर हु ट्रस्ट मी। Yeah. लेकिन हम बताते क्या हैं दूसरों को और अपने आप को, ट्रस्ट करना आसान नहीं होता, ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है, ट्रस्ट ये करना पड़ता है, ट्रस्ट वो करना पड़ता है, और चाह रहे हैं हम कि वो हमें मिले, तो हम चित भी चाह रहे हैं, पट भी चाह रहे हैं। Okay. So, but how can we change this energy or thought process or thinking pattern that we have coming from a belief system? So, What is that one thing that we will be able to change in the thinking pattern? Or maybe बिहेवियर और एटीट्यूड जो होता है वो तो सिर्फ ऊपर की चीजें होती हैं। बिहेवियर एंड एटीट्यूड इज लाइक द फ्रूट्स ऑन अ ट्री।
Right. तो दुनिया को वो फ्रूट्स दिखते हैं, और फ्रूट्स अगर सड़े हैं तो आपको दिखता है कि फ्रूट्स सड़ गए हैं, लेकिन रूट्स नहीं दिखती हैं क्योंकि रूट्स जमीन के अंदर है। अगर रूट्स सड़ी हुई हैं तो वो नहीं दिख रही। Right. तो Right. प्रॉब्लम इज नॉट, हम सड़े हुए फ्रूट्स को देखते हैं और हम उस पर पेस्टिसाइड मारने लगते हैं, उसी को ठीक करने लगते हैं, हम उसी पे बिहेवियर एटीट्यूड पे काम करते हैं। बिहेवियर और एटीट्यूड का इशू नहीं है, इशू है रूट्स का, इशू है थिंकिंग का, इशू है बिलीफ सिस्टम का। जब वो बिलीफ सिस्टम चेंज होता है तो बिहेवियर और एटीट्यूड, ऊपर की चीजें अपने आप फिक्स हो जाती Right. Right. Getting it. है, राइट। तो हम गलत जगह फोकस करके गलत जगह काम कर रहे हैं, और बहुत दिन तक वो काम करने के बाद भी जब रिजल्ट्स नहीं आते तो हम डिसहार्टन हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि इतने दिन से लगी हूँ, इतने दिन से कर रही हूँ, फिर भी कुछ नहीं होगा ही नहीं। क्योंकि एक फ्रूट पे आपने पेस्टिसाइड मार के उसको ठीक कर दिया, बट रूट्स, जड़ें तो खराब हैं, फिर नया फ्रूट जो आएगा वो भी बेकार ही आएगा। Yeah. Yeah. तो कब तक एक एक फ्रूट को, कब तक एक बिहेवियर को, एक एटीट्यूड को चेंज करते रहोगे? क्यों नहीं जस्ट गो एंड डू द वर्क एट द रूट लेवल एंड फिक्स द रूट्स। Yeah. एंड फिक्सिंग द रूट्स मीन्स कि ये ट्रस्ट इशू आया कहाँ से है? ये चाइल्डहुड से आया है, चाइल्डहुड हाँ, तो जहाँ से भी आया है उस चीज को जाके फिक्स करने की जरूरत है। ओके। जो भी रीजन से आया है वहां जाना है और उन रूट्स को फिक्स करना है। दैट इज हाउ द, वो फिर ऊपर का जो बिहेवियर होता है वो अपने आप चेंज होता है। शिफ्ट ऊपर का शिफ्ट अपने आप आता है, उस पर काम करने की जरूरत होती ही नहीं है जनरली। 90% ऑफ द टाइम नॉट रिक्वायर्ड टू फिक्स द बिहेवियर एंड एटीट्यूड। अंदर का काम हुआ तो ऊपर अपने आप रिजल्ट आ जाता है। Okay. Karma, I don't have trust issues. In fact, I trust people blindly. I mean, I don't have trust issues. What issue is this? I think I don't know how to put it in words, but I'm trying to. Is this that my biggest issue that I feel is this, that I trust people easily and I demand the same trust from them. And mostly, where it goes wrong is this, that I am like way too giver, way too honest. And sometimes people, it's not about dishonesty or lying. Sometimes maybe some person is not able to tell you the truth because they are not in that. I mean, if I am an individual, the other person is also individual. We've just met. Maybe for me, opening up quickly and very soon is okay. Trusting very easily and trusting very quickly like this is a sign of not having healthy boundaries. Yeah. Yes. So And it's not, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया में सारे लोग जो हैं वो सही हैं। बहुत लोग ill intentions भी होते हैं। Yeah. How do we know that? So with life experience you need to know that. How do you know? There is no how as such, like कोई ऐसा कोई 3-step process, 5 steps process नहीं है उसका। अपने लाइफ एक्सपीरियंस को यूज करो। लाइफ आपको रोज सिखा रही है हाउ, आप ही नहीं देख रहे हो। Yeah, but when we are saying, if we define a pattern, even in the patterns it's getting repeated. What is that we don't tend to see? So supposing if I am that you are not able to set healthy boundaries. One thing I would like to add here. I mean, this is going in all different directions, right? It's question after question, so it's literally I'm not able to follow it. But one thing I would add on to what Seema, how you started. If you are again and again, first of all, you use the sentence, I am attracting such people in my life. Rather than that, we should start using the sentence, I am attracted to such people in my life. Because it's not just that you are attracting such people, you are attracted to such people. That is why you respond to such people. That is why you entertain such people. So that is first, तो पहले तो responsibility लेने की, I am attracted to such people. ठीक है, उसके बाद getting into why I am attracted to such people. And if you are again and again manifesting the same kind of people, and you are saying at the other point of time कि मैं aware हो गई हूँ और फिर भी मैं क्यों attract कर रही हूँ, that means कि आप जिस चीज से aware हुए हो, whatever pattern you have gotten aware of is not exactly the pattern which you need to deal with. ठीक है, आप अभी तक aware हुए ही नहीं हो, क्योंकि जब वो पहली
in most of the cases, जब वो actual awareness आती है ना कि अच्छा this is the root, this is the actual root of the problem, तो वो वहीं पे डिसॉल्व हो जाता है. एंड हाँ, इन मेनी केसेस, फॉर एन एग्जांपल, हम सुकर्मा का के बारे में बात कर रहे थे. मे बी शी एक्चुअली नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स बट देन स्टिल कंटिन्यूज. इन हर केस आल्सो आई वुड से कि एक्चुअल जो रूट का अवेयरनेस है वो दैट हैज नॉट अराइव्ड येट. ठीक है, तो जब वो रूट का अवेयरनेस आता है तो इट वुड जस्ट डिसॉल्व. इट इज मेंट टू डिसॉल्व, राइट? So, And now I want to understand from you, because since you are saying this, so yeah, maybe you're right. But even if I'm aware of the root and I'm working on it, but still I see that somehow maybe the person is different in the beginning, and somehow in the middle of the relationship, or say when it starts getting progressing, it turns out to be same again. So being aware, even working on it, how one like Anamika is saying कि what Anamika is saying कि आपकी diagnosis गलत है. अच्छा, हाँ, that is what she is saying. आपने वही चीज ली और आप सुनो आप क्या बोल रहे हो. You are saying कि I am aware and I am doing, but then this is. But आपने जहाँ but use कर लिया वहाँ पे you just negated the first part of it. okay. How is it possible कि diagnose सही हुई थी लेकिन फिर भी ये हो रहा है? तो diagnose सही नहीं हुई थी ना फिर. आपने डायग्नोस कर लिया कि मुझे फीवर है, ठीक है, आपको सर्टेनली फीवर है, ठीक है, और आप बोल रहे हो नाउ कि मुझे इस रीजन से फीवर आता है एंड यू आर टेकिंग मेडिसिन फॉर इट, बट फिर भी फीवर जा नहीं रहा है, ठीक है, फिर भी आया जा रहा है, बार बार आया जा रहा है. दैट मीन्स कि द रीजन विच यू हैव फिगर्ड आउट कि आपको फीवर क्यों आ रहा है probably is not the right reason. You have to see more कि हाँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे आपने अवेयरनेस लाया है वो जगह वो चीज खराब है, बट वो एक सिर्फ एस्पेक्ट होगा. दैट्स नॉट द रूट ऑफ इट. वो ट्री का probably it's just a branch of the tree, but it's not the root of the tree. तो रूट में और ज्यादा जाने की जरूरत है कि एक्चुअली वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, एंड देन ऑफ कोर्स वर्क नीड्स टू बी डन. ऐसा नहीं है सिर्फ अवेयरनेस, वी गेट अवेयर एंड things don't just happen. We have to go through the healing process, plus उसके बाद वो चीज actions में हमें कई बार practice भी करनी पड़ती है, क्योंकि healthy boundaries, let's suppose I get to know I don't set healthy boundaries, what then? ठीक है, तो अब healthy boundaries का first of all getting into roots, why you are not able to set healthy boundaries, then उस root को heal करना, and then उस चीज पे action भी लेना. And in most cases कई बार हैबिट बन जाती है. हम इतने साल से 10 20 30 साल से ये करते रहते हैं तो हैबिट बन जाती है कि हम इतने इजीली उस बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाते हैं. बट फॉर मोस्ट पीपल एंड इन मोस्ट केसेस जब वो एक्चुअल अवेयरनेस हिट हो जाती है ना, इट जस्ट स्टॉप्स हैपनिंग. आप वो कर ही नहीं पाते हो, ठीक है, मतलब आपको पता चल गया एंड यू आर राइट देयर एंड यू आर सीइंग द ट्रूथ राइट इन फ्रंट ऑफ यू कि ओ दिस इज वेयर इट स्टार्टेड एंड दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. You just won't be able to take that action. And maybe even if you take that action for some time, but you'll still be like, no. So there will be an inner compass which will be there, which will be like, yaar, tu fir se aisa hi kar rahi hai. So just have a check. Just see this, do this. Yeah. So maybe in the last relationship I did it, like not only being aware but taking a step. Whether for a time being I felt like, oh, how can I do this? Oh, I will lose a chance. Oh, I should not be doing this. I'll lose this person forever. So then whatever was happening, I knew that I'm breaking my, because I've healed myself for that particular reasons. So my conscience was not allowing me to be with the person who was like not good for me. Not like everything was like coming in front of me and ignoring it was not easy for me anymore. So I took a stand, and I think certain parts I have healed, but certain things are still there which needs to be healed. And yeah. And one more aspect of taking decisions like this is they are like really harsh decisions. When you say ki, let's suppose I just said goodbye to my best friend and I had like 15 years of friendship. It's hard, it's hurting me, but the moment the good checkpoint for you to realize if you have healed from it or not is
that there will be no regrets. Even if you know that it was a relationship of 15 years, 25 years, or 5 months, which was so deep, which was so intense and so nice, and you were so much into it, but still you will be so clear कि यही करना था. This is what I actually wanted to do. You won't question it कि अरे यार I have lost this and I've lost that and now I won't get this ever again. So it doesn't come from the space of So initially, fear. yeah, but initially, if we all are having some patterns or addictions or habits, actual, I think for me, it's like some habits which we have been like, say, not born with it, but developed with time, takes time to change. In the sense that, yes, initially I had issues of accepting that I have done something like that for me. So yeah, so if I say the regrets was there, regrets were coming because of that unhealed portion or that logical mind interfering, or maybe whatever the belief system I had for coming it not from me but from some other people's mind. So yes, initially it was difficult for me to accept it, and even sometimes feeling regretful because for a habit in relationships to be in certain way, because I've been in a narcissist relationship, so with that the habit was too much of taking too much. So till that time अगर वो stage तक वो relationship नहीं पहुंचता, उसको पहले से break करना, where I'm feeling that this is not right for me, wasn't initially a task for me. But yes, with time I know that I'm happy because I don't want to do something similar to myself and get into. If in first place I'm feeling not all right, I'll be standing about it. Okay, maybe this muscle I'm replacing with the old habit, that is of being with abusive people for long and not standing for my self worth. But when I'm developing my self worth, I think that is also going to take time because I'm practicing it like this, in the sense I'm not harming anybody, but I'm like saving myself. So yes, my mind will play a lot of things that are like patterns inside me, will take time to go initially off from my own self. So I don't know how much it is like okay to be like this with myself, because if I force myself too much, then I'm not able to do at all. So this is my first time that I could come out of it. In the first place where I felt that no, this is not something I want for myself. This is not good for me. So I could see what is happening. So other than being aware, I went for it. Yes, it was an uncomfortable place to be, because yes, when you be in the narcissist and from the childhood or whatever the patterns, there was one big pattern of people pleasing also, because for me the love was taught like that. So setting a boundary there, it took time, but it's there now, so it's not going to go. So that's true that that thing is dissolved. Only thing that I feel sometimes is a cross questioning and check with my own self, because I don't want to I'm not a person who's like that. So I think I just cross check myself, that is it coming from a place of my boundary or is it coming from my pride side? Does it make any sense? Yeah, that's fine. That's okay. Thanks, Ina. Thanks, Sukanya. It's 6 o'clock, so if anyone, although we wanted 3 people, but we've already used 1 hour. In case if anyone has anything to say, then we can take another one, but if not, then we can wrap up the call also. Yeah. So Karma, you want to say something? Not really. Sometimes there are so many confusions in mind that best thing is to absorb and listen as much as you can and then process it as time passes by. Yeah. I think you need to start changing this sentence itself. For you, processing is not a very good thing. You need to stop processing things and start doing things. Okay. Yeah. That's I think you have been processing for 40 years. I don't know how much more processing you will be continuing to do. The processing itself has become your issue.
Actually, quite possible. What you say could be Yeah. Take action now. Take action. Do something about this now. So start approaching people who can help you to do something about this. So time to take some action. So processing will happen in its own time. Let's give yourself more material to process. You don't even have material to process. You just keep churning. जैसे वो गाय जुगाली करती रहती है ना, उसी चीज को बस that is what is happening in your case. Okay. So I think you need to stop saying this. कि I need to process this and all that. Just get in the action mode now. Sure. No, it was a very interesting interaction and insights that both of you have given today. And one sentence you used during when you were talking, that something you talked about purpose, that you have done everything, like whatever you defined key life should look like that you have done so much for your children. You have provided for them, you took care of them, nurtured them. Maybe you did many good deeds, maybe in the work you do, or maybe in just any of the areas like helping people, supporting people, right? And then when you started the story, you said that I want to be useful to people, so I don't want people to forget. Right? I don't want to die unwanted. Unwanted, yes, you don't want to die unwanted. The second thing you said, that you have done all of these things. And the third thing you said, that you feel that life has no purpose or something like that, you said. I don't remember the exact sentence. That's right. And just see how these three things count, because the first thing, you define the purpose of your life, and the end thing, it says that now life has no purpose. If the first thing was the purpose of your life, you would just happily continue doing it, because that was the purpose of your life. But the first sentence and the last sentence of this story just doesn't match. Then where's the gap? Why do you still feel that there's something just left out? And what is that thing which is left out? Because you have done everything. No, even today, like last 3 months, I have joined an NGO and I'm enjoying my work with them, with the founder president. He tells many other people that though it's just 3 months, it feels as if Seema is working with us for 30 years. So I'm enjoying that also. So honestly speaking, I'm so confused, and I think, as Akarma said, I need to stop वो beating around the bush वाली बात है ना, जो अपनी अपनी मतलब वो थोड़ा सा कुछ वही चीज पे. तो I don't know if that is a problem also with me, or has that problem become an integral part of my life, and I don't know. I mean, that's where I need to now, as guided rightly by Karma, probably an external help will help me reach to the root cause instead of just trying to feel good. And because these things do not compute. Because if the first sentence was right, then you would be like happy. These things wouldn't come up. Right? And if these things are still coming up, then I mean, that's a very casual thing कि यार अब क्या है, अभी now what more I have to do in my life, like अभी और क्या बाकी है type. मतलब it's not out of helplessness or negativity या निराशा से नहीं है वो feeling. But is it coming from the state of like fulfillment? I can say that. I mean, if it's not too bold a claim, I can say that कि यार अब सब कुछ हो गया, अब कोई मतलब ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जिसके लिए मुझे अभी और आगे ड्रैग करना है अपने आप को. या another thing is, I have a fear of being dependent on someone, that अभी as I grow old, I don't want to be a burden on my kids. That's another point which bothers me. So yeah, I think so if you feel fulfilled, then why do you keep thinking about it? That is the problem precisely. That's the addiction part. And yeah, I think Akarma mentioned it very aptly, that probably it's मतलब it's become आदत पड़ गई है कोई ना कोई चीज को पकड़ के वही करने की. की आदत है, 40 साल की एडिक्शन है, इतनी जल्दी ऐसे नहीं, ये बातों से नहीं जाएगी. इसीलिए हम saying कि no amount of questioning can help you, because you have answers for everything. Oh, that's too bad, you mean to say?
It is bad because sometimes, as I said, that many, especially when it comes to our healing, then the more intelligent we approach towards this thing, the more harm we do for ourselves. आप किसी Okay. डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बीमारी है, और आप डॉक्टर को बात करने की बजाय आप उसी को बता रहे हो कि इलाज कैसे करना चाहिए. So it is going to harm you only. I get it. I understand. हाँ, तो आपको जैसे अभी मैंने एक डायरेक्शन दिया, एक पॉइंटर दिया है, ठीक है. अब Right. आप क्या प्रोसेसिंग करोगे इसमें? मुझे तो नहीं समझ में आया कि आप प्रोसेसिंग क्या करोगे. आप क्या बैठ के गूगल पे मतलब सर्च मारोगे कि पार्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, सोचना तो उसके बारे में पड़ेगा ना रीड मुझे. करो. क्या हाँ. सोचना पड़ेगा? आप नहीं. जाओ और किसी से बात करो जिन्होंने ये किया है, और उनसे करवाओ और करवा के देखो. ठीक And है. you want to approach us, you approach us. You want to approach someone, you approach. अब बिना करे कैसे आपको पता चलेगा? क्या प्रोसेसिंग करोगे आप बैठ के? आपको कोई बीमारी, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको बताता है डायग्नोस करके कि ये है, तो आप क्या प्रोसेसिंग करते हो? आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? यू विल टेक अ सेकंड ओपिनियन. बट इलाज तो कराना है ना. प्रोसेसिंग से क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? So So, you but can okay, go and take okay, second okay. opinion about this. I understand. No, not that way also, because this forum is very highly, matured and intelligent. I'm saying you should. I'm not नहीं, मैं तो encourage कर रहा हूँ कि आप करो, क्योंकि मैं तो आपको encourage कर रहा हूँ कि आप action लो. But am I able to define my problem also? ये मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हाँ. was I able to define my problem at all? I Clearly. yes. Okay. I got your problem. As I said कि हाँ. आपकी problem यही है कि आपको आदत पड़ चुकी है इसकी. So you were able to define the problem. I get that. क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मे बी एग्जिस्ट करती ही नहीं है. वो आपका जो अनवांटेड चाइल्ड वाला आपने बताया, वो सारी चीजें वो गॉन इन पास्ट. एक तरफ आप बोल रहे हो कि you are having a very good relation with your mother, it's not troubling you. सारी चीजें जा चुकी हैं, ये ही नहीं जा रही है, ये थॉट नहीं जा रही है. तो एडिक्शन है. Okay. No, I think thanks a ton for opening my eyes, because interesting session. हाँ, तो मैं तो आपको यही रेकमेंड कर रहा हूँ कि ज्यादा सोचो मत और इस पे एक्शन लो. मीट समवन हु यू कैन ट्रस्ट एंड फाइंड आउट कि आपकी कौन कैसे हेल्प कर सकता है. ये आप खुद तो नहीं कर पाओगे अपना इलाज. यू हैव टू गेट इट डन विद समवन. So you can approach us, you can approach someone else, totally up to you. But my recommendation is take some action. Sure. Don't keep processing. Sure, I'll do that. Thanks a ton. No problem. I have Seema. Overthinking, procrastination, and what 𝗖𝗹𝗿 is also like you have diagnosed. Are these like all similar, or there is a difference between all these three, or there is just like the name of these? Overthinking is also considered as procrastination, and like too logical. They can be different, they can be same, very subjective thing. It's not like personal ही हम बात कर सकते हैं. तो it's something, there is no general answer. क्योंकि अगर ये एक ही होती तो फिर हम 3 अलग अलग वर्ड क्यों यूज करते हैं उसके लिए? तो एक तो नहीं है ना, अलग अलग तो है ही, पर एक हो भी सकती है किसी के लिए, कोई किसी के लिए हो सकती है, किसी के लिए नहीं होगी. तो वो तो सिचुएशन जब हमें समझ में आएगी तो ही हम बता सकते हैं कि हाँ आपके लिए ये सेम है या आपके लिए अलग है. हम वो बता सकते हैं. जनरल तो इसका आंसर यही है कि 3 अगर अलग अलग कॉन्सेप्ट है तो मतलब तीनों अलग हैं. ओके. तीनों अलग अलग हैं, तीनों में एक चीज सिमिलर है. एंड द थिंग इज कि तीनों ही इफेक्ट्स हैं, कॉज कोई भी नहीं है. ओवरथिंकिंग इज एन इफेक्ट. Procrastination is an effect. Addiction is also an effect. तीनों ही इफेक्ट्स हैं, और किसी को सेम कॉज से ये तीनों इफेक्ट्स हो सकते हैं, किसी को एक आध हो सकता है, I mean 1 or maybe all 3, but the cause can be different for everybody, right? So can you like give an example for if somebody has 3, just to understand better that how do one know that
उसको ये तीनों है, these three, or just one of it. So like No, that can be just observed in your daily life. Na? Are you procrastinating things? Are you overthinking? Are you okay. addicted to the same behavior? If it is just manifesting in your daily activities, it's just there, then what? प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स कि आपको पता है कि आपको क्या करना है और आप कर नहीं रहे, राइट? यू आर जस्ट स्टॉलिंग, यू जस्ट पुटिंग थिंग्स अवे. आपको लाइक यू जस्ट सिटिंग ऑन द काउच, करना है करना है करना है, हाँ पता है करना है, कर नहीं रहे. दैट्स प्रोक्रेस्टिनेशन. ओवर थिंकिंग इज कि आपके एंगल्स ही खत्म नहीं हो रहे, आपके व्हाट इफ ही खत्म नहीं हो रहे. दैट इज ओवर थिंकिंग, दैट इज ओवर एनालिसिस. जो हम इन्वेंट कर करके कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दैट इज ओवर एनालिसिस. एनालिसिस इज फाइन कि चीजों को सोचना अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कब बंद करना है और कब एक्शन लेना है वो है. व्हाट इफ ही खत्म नहीं हो रहे, जो आपके हैं भी नहीं, एप्लीकेबल भी नहीं है, बट इन्वेंट कर करके अगर रीजन निकाल रहे हो तो दैट्स ओवर. Right. तो कौन सी टेंडेंसी में हो वो तो केस टू केस सब्जेक्ट वाइज ही पता चलेगा ना. And if you are over analyzing and because of that you are not able to take action, so it could look like procrastination. But generally that is not procrastination. Procrastination is कि जब आपको क्लियर है कि आपको करना क्या है, आप कर ही नहीं. But what if somebody knows that I know I have to do this, but will it not be procrastination that I know something is I know, and मैं उसे overthink कर करके because I'm not satisfied at my mind level, or something is like there is like too much of what ifs, or हाँ then करेक्ट also है ना. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सही है कि वैसा है, लेकिन क्वेश्चन आपको ये नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन ये करना चाहिए कि ये ना करके मेरे ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है. आई एम स्टिल लिविंग विद द इम्पैक्ट. तो ओवर एनालिसिस और प्रोक्रेस्टिनेशन इन दो केसेस में होती है जब वो हमारे लिए हाई प्रायोरिटी नहीं है. okay आई स्टिल हैव द लग्जरी. आपके घर में आग लगी होगी ना, तो आप बैठ के प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे कि पानी डालूं या फूंक मारूं या ये करूं. आपको जो हाथ आएगा आप वो करोगे, right. राइट? तो आग लगी नहीं है. That is what the urgency is not there. So you have to see the urgency in this thing. तब आग लगी. अर्जेंसी पे फोकस ही नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पे फोकस है. अर्जेंसी पे फोकस तब आता है जब यू फिगर आउट कि आपको ये किस तरह से इम्पैक्ट कर, तब आग लगती है. क्योंकि आग तो लगी हुई है, आपको दिख नहीं रही है, वो अलग बात है. तो that is the thing. You have to see कि how your life is getting screwed by all. Then you will take action. और जब तक आपको ये लगेगा ना हाँ चल रहा है ना, ठीक है ना, चल रहा है, हो रहा है, जैसे अभी चल रहा है, फिर तब तक तो फिर ये व्हाट इफ ही चलते रहेंगे. तो इससे कि the problem is important but it is not urgent. तो किसी भी चीज के ऊपर एक्शन लेने के लिए ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए कि इट शुड बी इम्पोर्टेंट एंड इट शुड बी अर्जेंट. तो इम्पोर्टेंट है वो तो है, इसीलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं. तो आई अंडरस्टैंड कि जितने भी लोग यहाँ ज्वाइन हुए हैं, बात कर रहे हैं, नहीं भी बात कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक या ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, बट अर्जेंट नहीं होंगी. क्योंकि फिर वैसे होता है ना कि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे बड़े हैं, अभी जॉब नहीं है, अभी जॉब है, जॉब नहीं है तो प्रॉब्लम, जॉब है तो प्रॉब्लम, बच्चे छोटे हैं तो प्रॉब्लम, बच्चे बड़े हो गए तो प्रॉब्लम, पर्पस है तो प्रॉब्लम, पर्पस नहीं है तो प्रॉब्लम. आई थिंक ये भी तो एक ओवर एनालिसिस हो जाता है ना. लाइक फॉर मी लाइक हाँ, वो ओवर एनालिसिस से निकलने के लिए ही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो आग देखने की जरूरत है ना. आग दिख नहीं रही है, आग है, लेकिन आग दिख रही है. जब आग देख लोगे तो ओवर एनालिसिस से अपने आप यू विल जंप आउट ऑफ द काउच. तो फोकस ऑन अर्जेंसी, फोकस ऑन नॉट ऑन
कि इंफॉर्मेशन पूरी मिल गई या नहीं मिल गई, क्योंकि हर एंगल से एनालिसिस करना तो किसी की भी बस में नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी होती है, वो डॉक्टर भी आपकी डायग्नोज करते हैं, तो वो डॉक्टर भी कोई 100% नहीं श्योर होते कि यही होगा, लेकिन वो श्योर एनफ होते हैं कि इस डायरेक्शन से इलाज करना शुरू कर सकते हैं। राइट, लेट्स ट्राई दिस, गो फॉर दिस टेस्ट, डू दिस, डू दैट, हाँ ये टेस्ट करके देखते हैं, यहाँ से ये पता चला, इस पर फोकस करते करते और चीजें पता चलती हैं और चीजों का इलाज फिर हो जाता है। पर पहले ही बैठे रहो कि जब तक 100% श्योर नहीं हो जाएगा कि क्या इलाज करना, तब तक मैं उठूंगी नहीं, तो वो बीमारी तो बढ़ ही रही है ना। राइट, वो थोड़ी कहीं गई है, वो तो है। वो प्रॉब्लम तो कहीं गई नहीं है। आपके ओवर एनालिसिस से वो कुछ ठीक थोड़ी हो रहा है। आपके ओवर एनालिसिस से बस आपका फोकस नहीं है उस चीज के ऊपर, दैट्स द ओनली थिंग। फिर वो एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि आप डेस्परेटली फिर लोग किसी भी चीज के पीछे भागते हैं। दैट इज व्हेन दे गेट टेकन एडवांटेज ऑफ। क्योंकि तब आप इतने डेस्परेट हो जाते हो कि आप फिर कुछ भी ट्राई करोगे। फिर आपको बोलेगा कोई कि ये ताबीज पहन ले, तो आप ताबीज भी पहन लोगे। True that. हाँ, तो फोकस ऑन द अर्जेंसी साइड ऑफ थिंग्स। फोकस की कहाँ आग लगी है और वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो आग बुझाना। अगर आपको लगता है कि हाँ आग लगी है, ठीक है, छोटी सी है, फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, तो देन यू नो कि नहीं फर्क पड़ता। यू नो कि लाइफ में हमारे तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, हर प्रॉब्लम थोड़ी हम सॉल्व करते हैं। तो मैनी प्रॉब्लम्स वी आर ओके टू लिव विद ऑल्सो। So you decide कि हाँ this is a problem and I'm okay to live with it, so just continue। फिर at least put your mind to rest to say acknowledge कि हाँ ये problem है और मुझे नहीं solve करनी। Then also it's good, but at least bring the focus to the problem. Don't keep bringing focus to analysis. Right. I also think and believe that when we give priority to others, like whether it's a family, husband, kids, anybody else, then definitely this is the biggest excuse that maybe whatever my reason for this also is, that I don't give myself time, I don't have time. I think if I'll be better as a person, maybe a healed version will be better for everybody around me. Whether it's my kids, my family, I'll be able to give them more. Because right now I have issues and I don't realize that, or maybe I realize it but not doing anything about it. It's definitely not helping. And every time it's like more trouble enters in, and then for few days it's fine, then again something और happens, then I realize. इतना कुछ वो नहीं है इसमें, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दी ओनली थिंग इज यू हैव टू जस्ट डिसाइड कि ये प्रॉब्लम है, आई एक्नॉलेज, और मुझे कुछ नहीं करना है इसके बाद। देन ऑल्सो डिसाइड, एटलीस्ट डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ, तो आपका माइंड रेस्ट तो ले लेगा कम से कम। ये तो आपने खुद को बोल दिया ना कि हाँ मेरे को पता है कि ये प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं करना कुछ, आई एम ओके टू लिव विद दिस प्रॉब्लम। जब बड़ी होगी तब देखेंगे, अभी इतनी बड़ी नहीं है, अभी ये सॉल्व करने के लिए मेरे पास और 10 प्रॉब्लम्स हैं फोकस करने के लिए। तो यू फोकस ऑन समथिंग विच इज मोर हाई प्रायोरिटी एंड ऑल दैट। सो एटलीस्ट कीप योर प्रायोरिटीज क्लियर एंड डिसाइड। डिसीजन हमेशा नीड बेस्ड होना चाहिए। डिसीजन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम उल्टा करते हैं, हम दुनिया भर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिगर आउट करने की पहले हाउ फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। हाउ नहीं होता है। आज अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू हो जाता है और अगर आपको आज डॉक्टर बोल देता है कि ये प्रॉब्लम है, तो आप हाउ पे नहीं बैठे रहते हो कि हाउ यू स्टार्ट, आप हाथ पैर मारना शुरू कर देते हो। राइट, आप 50 दरवाजे खटखटाना शुरू कर दोगे। तो that is the action mode I'm saying. So at least put yourself in that action mode. दरवाजे खटखटाने तो शुरू करो। खटखटाते खटखटाते एनालिसिस करते रहना। बैठे हुए क्यों एनालिसिस कर रहे हो सिर्फ? और बैठे हुए एनालिसिस से क्या मिलने वाला है? आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया हो जाएगी, बहुत कुछ पता चल जाएगा, काफी वाइज हो जाओगे। प्रॉब्लम तो वही की वही। वाइज होने से प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होगी, प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा, which is difficult because you can because it's not. Sometimes it's more difficult not to work on it. That's the thing. Sometimes the hardest thing is sometimes difficult part is to not do something about it. Really? That is the focus you need to bring on. काम करना difficult है, yes. किसी को अगर स्मोकिंग छोड़नी है तो छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए लोग छोड़ नहीं पाते हैं. लेकिन ना छोड़ने की वजह से क्या हो रहा है, फोकस उस पे लाना है. फोकस इस चीज पे नहीं लाना है कि काम है, काम करना पड़ेगा. काम तो करना ही पड़ेगा. अभी अगर 10 रुपए का काम करना है तो 6 महीने बाद 50 रुपए का करना पड़ेगा, 100 रुपए का करना पड़ेगा. और 2 साल के बाद तो 1000 रुपए का करना पड़ेगा. Right. This is not something which is going to get better with time. It is only going to get worse. So why the focus on amount of work that needs to be done? The focus should be कि what are you losing by not doing it? Then see कि क्या अर्जेंसी क्रिएट हुई उस चीज पे, क्वेश्चन वो करो. और अगर वो करने से अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैंने नहीं किया तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं ये करती भी रही तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो हो जाएगा, तो आई एम ओके विद दैट. तो देन ऑल्सो गुड, पुट योर माइंड टू रेस्ट. तो जब हो जाएगा तो यू आर रेडी, यू आर प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपको तो पता है कि हाँ अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो ये हो जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये होगा, और अगर ये हो भी गया तो ठीक है. अब लाइक सुकर्मा इज सेइंग कि I don't want to rely on my kids and I want to, ठीक है, that's fine, so then focus on it. तो इसी से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो पॉइंट आ भी गया मेरी लाइफ में तो ऐसा होगा, एंड इसी से हाँ ठीक है, अगर वैसा हो गया तो इट्स फाइन, और अगर नहीं है तो फिर अभी कुछ करना पड़ेगा ना. Right. तो 56 और फिर 2 साल के बाद 4 साल के बाद शील से अब नाउ आई एम 60, अब और डेस्परेट हो रहा है, अब और ये हो रहा है, अब फिर उसके बाद आई एम 65, अब और डेस्परेट हो रहा है. तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ओनली जस्ट क्रिएटिंग एंजाइटी फॉर योरसेल्फ by not deciding. Yeah, exactly. I've been to that place. Not taking decision is bigger problem than actually the work involved or not work involved. So decide one way or the other. You decide कि ये करना है या नहीं करना है. Right. और दोनों के क्लियर होने चाहिए. करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना. दोनों क्लियर, और दोनों वे कर लो आपस में कि करने का क्या बेनिफिट है या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और ना करने की क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो क्लियर है. और फिर डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है, ये देख लिया मैंने, नहीं करना तो नहीं करो. फिर जस्ट टेल योरसेल्फ नहीं करना, छोड़ो, वो बात खत्म. इट विल पुट टू रेस्ट. Yeah. The mind is not put to rest because you're not able to decide. That I agree 100%. And it's very, very essential what I've realized, what you're saying, Karma, because faltu ka energy, I think, gets more focused on what I don't want, but not what I want. And most of the times, wo jo quality energy hota hai na, I spend it more on overthinking. Acha, if I do this, then what if this will happen? But I just get stuck in that loop pattern जो mind create करता है, उससे over rather than just focusing on the priority के एक बार ही करके देखते हैं कि क्या होगा. I mean, Exactly. just to maybe break that pattern simply just by just taking a step. Exactly. उसको wasted thoughts बोलते हैं. Yeah. That's the thoughts that just drain your energy. जिनसे कुछ नहीं मिलता है. It's just only draining your energy, only creating anxiety, only creating stress. Because you're not deciding. Yeah. आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी है, आपके ऑप्शंस भी क्लियर, और आपको कोई ऑप्शन पसंद नहीं आ रहा है, और इसलिए आप बेटर ऑप्शन की वेट किए जा रहे हैं, और वो विद टाइम बेटर होने वाला नहीं है. Right. So that's a classic example of being in an abusive marriage or narcissist. Now we be hopeful that this will get improved. Okay, let's give us another chance. So then it's like, it's keep happening till the time it's like, when you see yourself standing in the fire,
burning alive, then you may realize, oh no, हाँ, it's so like, you were saying ना कि कैसे सीखते हैं एग्जाम एक्सपीरियंस, और मैं बोल रहा हूँ कि आपको तो लाइफ हर समय एक्सपीरियंस दे रही है, आप ही नहीं सीख रहे हो, तो what do I say? You have been in a narcissist relationship, you can relate this with that and all that. अब आप अगर वो एक्सपीरियंस ला के इसमें लगा नहीं रहे हो एंड यू आर नॉट यूजिंग दैट एक्सपीरियंस, आप यहाँ बता तो रहे हो लेकिन सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो वो मुझे नहीं पता। लेकिन अब वो तो एक्सपीरियंस तो दे दिया ना आपको, लाइफ में लेसन भी दे दिया, right. आप बता भी रहे हो, बट अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो मुझे नहीं पता। और फिर उसके बाद यू से कि समटाइम वही आदत है ना कर्मा, ये नार्सिस के साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी है ना, वो जो घर से सीखा प्यार करने का तरीका इज लाइक पीपल प्लीजिंग, सो वो ये इसके साथ क्लैश कर जाती है। तो इट्स नॉट ओनली नार्सिसम, तो पीपल प्लीजिंग की वजह से मैं दूसरों को ज्यादा चांस देती हूँ, अपने आप को कम देती हूँ। तो जब तक वो एक्सट्रीम केस नहीं हो जाता तब तक जाके मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट मुझे बहुत डिफिकल्टी हुआ, आई एम टेलिंग यू, मोर देन लाइक not the regret, it was like breaking my own pattern was very difficult for me. But believe me, when I sleep I feel like थोड़ी देर procrastinate करूंगी उन thoughts को, but then I'm ultimately peaceful about it कि मैंने छोड़ दिया जो मेरे लिए ठीक नहीं है, and I'm not going to go back. Let my mind wander, let my mind think something for some time, I let it wander, but then I'm able to be peaceful at the end of the day. I can't afford to just keep being aware and not doing about anything about it, because I've given enough years of my life in such things. Now, if I want to improve, I have to improve my thinking also. In the sense, when life is giving me chances and making me understand, making it fine, then I should. I should. And I'm trying. ठीक है। ठीक है। Should we wrap up now? 6:30. Anybody else has anything to say, or should we wrap up? Any comment from any people who have not spoken yet? Maliswari, Mini, Saket, Sanket, Vidya, Trisha, Annapurna. You guys have not said anything. Is there anything you want to say, or should we wrap up? All are dead silent today. ठीक है, तो हाँ। Only we are. Cool. I'm always पकड़. इस अगर मैं एक last छोटा सा question I want to ask you is this. This is a thing that I see in myself is this. I don't know how to control it. I want to know कि इसका क्या reason होगा. ये चीज मैं break नहीं कर पा रही हूँ. It's like sometimes I'm very patient in the sense a person can speak for hours in front of me, and there are sometimes when I'm not. Sometimes I just want कि मैं ही बोलूँ दूसरा बोले ही ना. So what do you think that disbalance is all about? नहीं समझा मैं कुछ। So there are times when I'm a good listener, okay? I'm generally a good listener, but there are times when I don't want the other person to speak. I just want to be heard. Like it's something, some days that I'm like, no, I want to talk. I want to talk. And I don't give the other person to I mean, I just go on, and awareness is there that, oh, it's getting too much. Like why I'm talking so much. What do you think is the issue here? And I think what you just said, the issue could be that it's just building up so much in you that you want to say. can it be because I feel lonely? I mean, my friend circle has reduced, and I'm not able to connect and resonate with many people in the sense that I try to be participative also where I had to, but then there are like on off shuts in me, like numbness, like suddenly I feel lost, or suddenly I feel why I'm even talking, or why I'm doing like this, like why I'm talking, why I'm telling somebody about me, what's the fun again talking about it. So then that pattern starts in me, and I shut.
and I maybe disconnect from the conversation altogether. The And need for connection is always there, and by talking with someone that can understand us, we feel that connection. So that is one of the core needs mm, that we have. So if that gets only met with some people, so you will talk in front of them and you will not talk in front of others where you feel that they will not understand you. okay, And that's why. okay. But I'm asking you this because it's a issue that I had faced in my childhood, in my teenager, and still also. I'm setting my healthy boundaries, but I struggle a lot. Either I talk. I mean, I genuinely will go and talk about But my thoughts. then, Seema, coming back to the same thing that Anamika said before, if you use this sentence and say, I am setting healthy boundaries, but But yeah, that is an indication to you कि it's not happening. yeah, it's not तुम्हें happening. लग रहा है कि वो हो रहा है, but वो Okay, नहीं हो रहा. nahi ho So rahi. maybe it's something wrong with the method that you're applying. So I या तो diagnosis गलत है या method गलत है. method गलत नहीं होता. I start feeling very guilty. I practice it and then I start feeling guilty. Oh, हाँ तो वो ही तो फिर कैसे? So how? Then I don't think you understand the meaning of healthy boundary. How can a healthy boundary come from a state of such unhealed state? How are you calling it healthy boundaries then? फिर आप या तो बस वो words throw कर रहे हो तो conversation में बिना समझे. okay. तो healed state में नहीं हो तो कैसे healthy boundaries फिर करोगे? तो अगर तो फिर आप समझ ही नहीं रहे हो concepts को. नहीं, supposing I'm not seen on. I got what you're trying to say, Seema. You're saying कि healthy boundary set करने के बाद you feel guilty. ठीक है. Yeah. हाँ. So a True. quick example True. is, Natural. It's I- human. You have not set. So a quick example is, I want to understand, that's why I'm giving you. I'm sorry I'm taking time. Is this that, like supposing I know my brother, I'm not seen and heard in my family, in the sense, I know this been like from last 40 years, nothing is going to change. Even if I go and tell them politely, whatever ways. So now what I've decided is that my healthy boundary is where I'm getting affected or where I feel that this is a disrespect. I'll get up from that place and move my butt from there and do that. I do it. But then later I start feeling guilty about it, that I should have not done this and this. So this is वो what I'm समझ गए वो नहीं वो समझ गए. That is clear. I'm saying कि अगर ये feeling आ रही है तो you still haven't resolved your guilt problem. Okay. हाँ. नहीं, that is what I wanted to add, that if you have that pattern of people pleasing and whatever XYZ, and you feel guilty after setting a healthy boundary, it's human, it's normal, क्योंकि आप अपनी पूरी जिंदगी के पैटर्न को रिजॉल्व करके you are taking a different kind of action in a different direction. Yeah. तो उसमें ऐसा होता है. But along with that guilt, when you know you're consciously setting a healthy boundary, there's also another thing which comes up in the picture, and that thing is called maybe peace, maybe satisfaction, maybe contentment, maybe fulfillment, maybe that space where it's okay. It's okay that I feel guilty, but at the same point of time, I did the right thing. I chose myself, or I took the step. Yeah. It's not only guilt. थोड़ा guilt होगा. It's natural when in the beginning, when you're beginning this process. तो मैं ये बोलूँगा कि I personally feel कि यहाँ पे ये guilt word गलत यूज हो रहा है. Okay. क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये गिल्ट की जगह अगर लेट्स से कि यू आर डूइंग दैट विद योर ब्रदर एंड आउट ऑफ सम केयर एंड लव यू नाउ फील कि वो थोड़ा सा हर्ट फील हो रहे हैं या ये है, आपको केयर की वजह से ऐसा एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है कि ऐसे मैंने कर दिया और उसकी वजह से अभी है, तो वो अलग बात है. दैट इज फाइन. दैट व्हाट अनामिका इज सेइंग कि ठीक है, वो ठीक है आपने किया, बट आपको अंदर से तो पता है कि आपने जो किया वो सही किया. हाँ, वो पता है. फीलिंग अगर तो अगर गिल्ट फीलिंग आ रही है तो गिल्ट फीलिंग इज इंडिकेटिंग कि आप खुद ही कन्विंस नहीं थे उस चीज. क्योंकि आई एम क्वेश्चनिंग द वर्ड गिल्ट हियर.
Yeah, because the karma, फिर वो चीज, it comes from the a major big pattern of narcissism, and the thing that I've gone through in my life is from the teenage, from the childhood, then getting married, is the people where my voice was not heard. So now, after coming out of that abusive relationship or whatever, I'm always looking for left and right. Okay, so that to build up that self worth and self confidence will take time. I know I'm struggling with that because ये हो रहा है. It's not even the guilt. It's about my self confidence which has gone because I've taken all the statements from हाँ them, हाँ and तो that is why. सेटिंग हेल्दी बाउंड्री सेट करने से पहले आपको इंटरनल वर्क करने की जरूरत Yeah. है. यही चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, बट कहीं पे भी कुछ भी वर्ड थ्रो कर रहे हो कॉन्वर्सेशन में, इट्स नॉट लाइक दिस. आपको हेल्दी बाउंड्रीज पहले सेट करने से पहले तो इंटरनल वर्क खुद करना पड़ेगा कि यू बिकम टोटली कॉन्ग्रुएंट एंड टोटली कन्विंस्ड एंड वेरी सेटिस्फाइड कि ये मैं करने वाली हूँ और मुझे पता है कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, पर मेरे को ये करना है. गिल्ट तो आएगा ही नहीं उसमें. हाँ, बुरा लग सकता है आपको, चलो दूसरे का मूड खराब हो गया, यू केयर अबाउट दैट पर्सन, यू लव दैट पर्सन, एंड उससे उसका मूड खराब हो गया, एंड यू नो कि हाँ टेंट्रम्स तो थ्रो होंगे, राइट. सो यू नो दिस कि मैं ये करूंगी और टेंट्रम्स आएंगे. तो इसमें गिल्ट कहाँ आ रहा है? तो गिल्ट आ रहा है तो मतलब इंटरनल वर्क हुआ ही नहीं. इंटरनल वर्क करने से पहले ही आपने ये काम कर दिया और आपको उसका आया नहीं. इट्स लाइक द कार्ट बिफोर द हॉर्स. तो नहीं होगा ना. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तभी तो आप बार बार ये बोल करके फिर आप यू यूज बट. व्हेन यू से बट, दैट इटसेल्फ इज शोइंग कि आपका मेथड गलत है. आपको जो काम स्टेप नंबर 2 में करना है वो स्टेप नंबर 1 में कर रहे हो, और स्टेप नंबर 1 को कर ही नहीं रहे हो, या 2 या 3 में कर रहे हो, या जब भी टाइम मिल रहा है तब कर रहे हो. तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट. तो आपको ऐसे लग रहा है मैं कर तो रही हूँ बट हो नहीं रहा है, कर तो रही हूँ हो नहीं रहा है. नहीं होगा ना. No, it's basically not the guilt. It's about my self confidence, because I in my family, actually, it's more my issues have come from my family side rather than in my marriage. Marriage was a kind of a more modified version for the worst choice that I made because of that. But for 40 long damn years, that's why I was asking you habits, addiction patterns kya hote hain, because I can't heal myself because I'm also somewhere very logical. So if I don't get satisfied in my mind, I can't apply it in my life. My problem is this. So so that's why I ask you about the concept. So it's not the guilt, it's my self confidence not there. I know this is right for me. I have तो done the right thing. एक चीज, So I feel अगर bad आपको because अगर I आपको हीलिंग अगर आपको हीलिंग अच्छी तरह से करनी है तो एक चीज अच्छी तरह से समझ लो कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको करने के बाद समझ में आएंगी. okay. क्योंकि जो रीजंस या जो लॉजिक आप ढूंढ रहे हो ना, वो लॉजिक आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस, वो डॉट्स ही नहीं है आपके पास कनेक्ट करने के लिए. Okay. ठीक है. तो फर्स्ट गेट द डॉट्स. Yeah. यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, यू डोंट हैव द डॉट्स. तो वो पहले कर लो. करके जब आप कर लोगे ना, बिना उसमें अपना ज्यादा दिमाग लगाए, जस्ट कर लो उसको. पहले करके देख लो. यू आर फॉलोइंग द ई लर्निंग जर्नी. Yeah. यू जस्ट डू इट. जो उसमें लिखा है, जैसे लिखा है उसको कर लो. पहले अपना इंटरनल वर्क कर लो. Okay. Whether you feel convinced about it, you don't feel convinced about it, doesn't matter. So yesterday I wanted to ask a question, but I didn't because I'm in a uncomfortable place just hearing those. I was contemplating on this relationship things. So e-learning me, there are questions. I think there is a video which says that even if you feel that your identity was only based on the what people think and all, so it has sent me to a place where I was like, what? I have never, like, I knew it in installments that this is like that, but it's like bringing up. So that thing is so uncomfortable place to be. So I'm just trying to be with that feeling because I don't know how to fight it. Don't fight it. That is what I'm saying. Don't fight it. Especially don't fight it with your intellect. Okay. So just
be uncomfortable. Okay. So live that uncomfort. So okay, so हाथ जला लो, हम तो बोल रहे हैं आग में हाथ डालो, हाथ जलने दो. Yeah. तो तभी ये तपने के बाद ही ये चीज समझ में आएगी कि क्यों बोला था हाथ जलाने पे, क्यों ये चीज करने के लिए बोली थी. जब दूसरी साइड निकल के आओगे तो फिर ये प्रोसेस समझ में आएगा कि क्यों किया था. बिना वो प्रोसेस के गो थ्रू किए अगर लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं होगा, क्योंकि यू हैव नॉट गॉन थ्रू दिस. Yeah. And you will not get the reasons, and that is the problem, कि you are trying to understand things which can only come after experience. ये ऐसा जर्नी है जो पहले टेस्ट मिलता है, बाद में थ्योरी समझ में आता है. I'm getting it, and usually the problem is also most of the things I feel is this, that I always want a living proof of it first. Then only I will do. Otherwise, I will not do. So I think most of the things in my life, maybe I would have started, but I couldn't because of this reason, that I think logically. ये limiting belief है. This is a limiting belief, because लिविंग प्रूफ ढूंढ सकते हो आप, ऐसी बात तो नहीं है. हमारे ग्रुप में ही कितने लोगों ने जर्नी की हैं, एंड दे कीप टेलिंग यू एज वेल कि ये है, प्रूफ तो है. पर अगेन आई विल से, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि उन सब की सिचुएशन अलग है, उन सब का डिसिप्लिन लेवल अलग है, उनका इंटेंशन अलग है, उनका करने का मोटिवेशन लेवल अलग है कि क्यों उनको करना है. जो कर रहा है उसको रिजल्ट आ रहे, पर आपको इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि दूसरे को क्या रिजल्ट मिले? आप खुद अपना एग्जाम्पल खुद सेट करो ना करके. Yeah, right. सबकी सिचुएशन अलग है, कोई आपकी सिचुएशन से गुजरा नहीं है. तो अगर कोई आपको बता भी देगा कि ई लर्निंग जर्नी करने से मेरा तो ये हो गया, वो हो गया, जो कि लोग बताते ही रहते हैं, तो भी तो क्या फर्क पड़ गया आपको? Yeah, very true. Yeah, unless I go through, I think, see, we can only resonate with somebody's experience in e-learnings, which may or may not be like that. But yeah, if you are insisting so much, there is no harm going through it. कि आपके घर में आग लगी है और आपको उसको बुझाना है, तो आप बैठ के ये देखो कि दूसरों ने कैसे बुझाई थी, बढ़िया बुझाई थी या घटिया बुझाई थी, कैसे क्या किया था, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपना एक्शन लो ना, आप अपनी आग बुझाओ और अपना देखो कि आपको क्या रिजल्ट आए. Yeah, true. एंड वी आर ऑलवेज सेइंग कि करो तो सही, पहले चलो तो सही, चलने के बाद फिर क्वेश्चन करना कि ये हो रहा है नहीं. चलने से पहले अगर क्वेश्चन करोगे ना, एंड यू ओनली लुकिंग टू फॉर अस टू पैसिफाई यू, देन मैं तो नहीं करता पैसिफाई किसी को. I'm not asking you to pacify me. I just like to clear my concepts because that's it. पहले करो, उसके बाद फिर देखो कि ये क्यों है, क्योंकि ये चीजें समझाने के परे हैं फिलहाल तो. और ये ऐसी चीजें हैं ना जो आपने कर ली ना, तो आपका एक क्वेश्चन ही ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद आप आओगे ही नहीं मेरे से पूछने के लिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बोला था. और करने से पहले कितने भी क्वेश्चन पूछ लो, कितने भी आंसर दे दें हम, कितने भी लोग आपके सामने खड़े कर देंगे ना, आपका कोई ना कोई और रीजन निकलता ही आएगा उसको ना करने का. Very true. So that is what I was telling to Sukarma also, कि sometimes our intelligence comes in our way. Yeah. We become too smart for ourselves, and it hurts us. Yeah. So कई जगह पे अपनी इंटेलिजेंस को साइड में रख के just follow the process. If you trust the person who's asking you to follow the process, you just do it. या तो you go with someone who you trust. So ये बहुत important है कि आप अगर अपना अगर किसी आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो और बताते हो, तो आपको अगर वो डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जरूरी नहीं है, लेकिन आप ढूंढो ऐसे एटलीस्ट किसी पे तो ट्रस्ट करके आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो जस्ट पुट योर ट्रस्ट इन द पर्सन एंड फॉलो, एंड दैट्स इट. Yeah, it's not even trust for me. It's like मैं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में मेरे को थोड़ा सा इश्यूज हैं, लेकिन मैं आई एम ट्राइंग टू पुश माई सेल्फ, एंड it's not that I just come to the forum. I'm actually looking to heal myself. I don't want to be like just. I believe you. I'm not saying I don't believe. I do believe you.
कल से वो I know you want to do it. you, and it's a very bad place to be because suddenly मुझे अपने identity crisis हो गए. I mean, I'm like, हाँ. what? Like everything हाँ. is about others only in me. I've never thought about me. So it's something like making me pushing me to understand like wow, how this happened? Like what हाँ, did easy happen? नहीं है ये, easy नहीं है, लेकिन ये effective है. I can tell you that it's not easy. It is very effective. तो किसी तरह से ये टाइम निकाल लो, ये जर्नी क्रॉस कर लो, बस. इट इज इफेक्टिव. इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट इजी. आई नो दैट. हमने बनाई है, हमने ना सिर्फ बनाई है, हमने किया भी है. तो वी नो कि इट इज नॉट इजी. इट इज नॉट इजी टू फेस दीज क्वेश्चन. इट इज वेरी अनकंफर्टेबल. इट इज वेरी इन द फेस. एंड कई बार नहीं मन करता. मैं जानता हूँ. आई नो दैट. एंड आई एम सेइंग टू यू कि स्पेसिफाई करने के लिए तुम्हें पास कुछ नहीं. आई कैन ओनली टेल यू कि हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट है. आई कैन ओनली गिव यू दैट काइंड ऑफ एश्योरेंस कि आई नो. एंड इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, देन यू आर डूइंग इट करेक्टली. दैट इज ऑल्सो आई कैन एश्योर यू. Yeah, I'm like, whatever I wanted to ask you yesterday, I couldn't ask because I'm in a difficult place and talking with somewhere that question is troubling me inside because I've never thought about it. Like, it has pushed me to think about me. I've only, so that question that tells to recognize that everybody, is it about everybody that I'm carrying? And the answer was yes. So, it puts you to the place you're like, what? Like, I'm only about others. It's not me. So it's difficult to digest. First thing is that क्या मैंने अपने 40 years I've given it to people only. So it's like, अभी मैं हंस रही हूँ, फिर थोड़ी देर में मैं गुस्सा हो रही होंगी अपने ऊपर, फिर मैं मतलब so much is happening. So ये अच्छा है कि you are talking and we are recording this call. और फिर I would also like you to then after you complete, then you tell us again as well कि what happens. क्योंकि then people who will be listening to these recordings can see a before and after. You can yourself see the before and after. कि भाई जब ये कर रही थी तो मेरे को ये सब fears आ रहे थे, ये सब uncomfort thoughts आ रहे थे, and I was so hesitant to do this. लेकिन ये करने के बाद जब दूसरे एंड पे निकलोगे और what you will gain, then all these things will just seem so worth. yeah, तो वो सर्जरी के नाइफ के नीचे तो आना ही पड़ता है. but the surgery is the most essential part of life. So I'm grateful that at least I could do it. Like it's difficult, but it's necessary. हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम सिर्फ आपके साथ अंडरस्टैंडिंग दिखा सकते हैं. ये बोल सकते हैं कि हाँ, आई नो कि ये चाकू से कट लगेगा तो होगा, लेकिन आई नो कि ये काटना तो पड़ेगा. तो उसके अलावा कोई और आंसर नहीं. आई कैनॉट गिव यू इजी वे आउट फ्रॉम दिस. नहीं, चलो छोड़ो, ये मुश्किल पड़ रहा है तो ऐसे कर लो, वो नहीं है. यही है. Exactly. I think most of us does very difficult things for many people, but when it comes to us, we think कि नहीं हो जाएगा. But I think inner work is very difficult because it's like knowing yourself, and most of us doesn't want to because there are so many things that are coming up. Yes, it's a hard thing to change yourself, transform yourself, but then it's like living from your true self, what you are, without being ashamed about it or feeling guilty or anything that we have learned in our journey. And yes, it is difficult for maybe a few days, but once you start knowing yourself, it's beautiful also. ठीक है, चलो आज का रैप करते हैं. 2 घंटे होने वाले. But I will say this thing to you, last thing, कि you are on the right track. If this is making you uncomfortable, then you are doing it correctly. That's what I can tell you, because these is supposed to make you uncomfortable. Yeah, it is. So अगर it is doing that, then you are doing it correctly. That's all I can say. Yeah. अगर नहीं होता ना, अगर तुम अनकंफर्टेबल नहीं होते तो फिर मैं I would have questioned your dedication. नहीं, I'm uncomfortable. मैं उसके आगे नहीं जा पा रही हूँ. उसको अभी तक
इंट्रोस्पेक्ट ही करती जा रही हूँ तो हाँ, so then you are on the right track. I'm not able to Take go your time. yeah I'm Take your taking time. Take yeah. your time. Don't rush. Take your time. Complete it, and let's see where you get to after that. Okay, I'll do that and let you know. Sure. No. Okay. You Okay, guys. Thanks, Thank you. everyone. Thanks, Thanks, everyone. Ina. Have a good evening. Bye-bye. Bye. Thank you all.